स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स चल रहा था और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे पार्थिनोजेनेसिस। उसमें आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। उसका मैं एक फ्लो चार्ट बना करके आपको डिलीवर कर दिया, पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिला होगा। जिसको नहीं मिला है वो पर्सनली मुझे मैसेज कर देगा, ठीक है। अब मैं अगले टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ और यही हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का। क्लास 12 की ये सब बातें हैं। क्लास 12 लिसन केयरफुली। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट मीन्स आफ्टर, प्री मीन्स बिफोर, एंड द ओवरऑल process was actually around the fertilization. What happened actually the post fertilization events? The two basic concepts regarding post fertilization events, it is zygote formation, zygote formation and embryogenesis. Embryogenesis, keep in mind. What is zygote? Actually your heading should be zygote formation. Later we will describe about embryogenesis. Actually, when the male and female gametes fuse, suppose that this is the male gametes and this is the female gametes, both fuse to form a single cell diploid structure. It is gametes and it fuse to form the diploid single cell. It is, keep in mind, it is single cell diploid structure. So the first single cell diploid structure formed after the fusion of male and female gametes is called zygote. इस वीडियो को रिवर्ट करके आप जाइगोट का डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब इस जाइगोट में क्या होगा? सेल डिवीजन और उसके बाद क्या होगा? सेल डिफरेंशिएशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली सेल डिवीजन क्या होगा? ये जाइगोट जो है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 ऐसे बहुत सारे सेल्स बनाते जाएंगे, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ सेल यानी कि सेलुलर मास गैदर होगा। और सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा? सेल डिफरेंशिएशन में एक्चुअली वैरायटी ऑफ सेल बनेगा। इसमें एक जैसे सेल बनेंगे, इसमें वैरायटी ऑफ सेल बनेगा। कुछ स्पेशल काम करने के लिए एक सेल को दे दिया जाएगा, ये हाथ पैर कुछ और बनाएगा। कुछ और स्पेशल सेल बनेंगे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स बनाएंगे, जैसे लीवर, किडनी। कुछ और स्पेशल सेल्स बनेंगे जो न्यूरॉन्स वगैरह बनाएंगे। तो ये सेल डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। सो रिवर्ट बैक करके वीडियो सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन को एक बार से लिख लीजिए कॉपी में। So actually zygote form where in the organisms, that is your heading should be what is zygote. Regarding the zygote formation, your first heading should be the zygote, definition of zygote. Second, what happened after the zygote formation, the process of cell division and cell differentiation. उसके बाद क्या लिखेंगे अगली हेडिंग में? ऐसे पॉइंट डाल करके नोट, if the organisms perform internal fertilization then zygote develop will be internal, ठीक है। that is internal development, internal fertilization, the organisms that perform internal fertilization, zygote where form? Zygote form inside the body, keep in mind. If the animals or the plants perform external fertilization, then where is zygote form? Zygote form outside. Keep in mind. The key points is zygote is diploid. Some organisms like algae and fungi, when the zygote form outside from the body, then they develop the extraordinary protective layer that is called spores. Keep in mind. And inside the spores, zygote many times divide. Keep in mind. This cell division is depend upon which type of the stage the algae and fungi move into the next step of the life span. जैसे अगर ये जाइगोट है तो जाइगोट एक प्रोटेक्टिव लेयर स्पोर्स बना लेता है। इसके बाद डिपेंड करता है कि ये इसके अंदर जो जाइगोट है, जो सेल डिवीजन होगा वो मियोसिस होगा कि माइटोसिस हो, वो डिपेंड करता है कि एल्गी और फंगी नेक्स्ट स्टेप में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सर्वाइव करेंगे या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सर्वाइव करेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सर्वाइव करता है तो क्या होगा? इसके अंदर मियोसिस होगा, और उसके बाद क्या होगा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि सब के सब हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे इसके अंदर और फेवरेबल कंडीशन आने पे स्पोर्स ब्रस्ट हो जाएंगे और सभी के सभी जो उसके अंदर जो लिटिल जो जाइगोट्स हैं, जो लिटिल प्रोजेनी है, वो निकल के जर्मिनेट करेंगे। अगर ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है तो ये क्या हो जाएगा? ये माइटोसिस होगा। इसमें
माइटोसिस एज यूजुअल, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एज यूजुअल रहेंगे और इसके बाद जो है ये जर्मिनेट करके न्यू ऑफ स्प्रिंग बनाएगा. सो योर हेडिंग एंड योर एक्सप्लेनेशन विल बी अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर. नाउ बैक टू द एम्ब्रियोजेनेसिस. Embryogenesis definition. Formation of embryo from zygote is called as embryogenesis. Keep in mind. Suppose that the zygote form, later it will be form zygote by regular cell division and cell differentiation, and this zygote later develop into an organisms. The process of embryogenesis, it means embryo formation, will occurs either inside the body or outside of the body depending upon their type of fertilization. Suppose that if the organisms perform internal fertilization, keep in mind, if organisms perform internal fertilization, then tell me which kinds of where is the embryogenesis occurs, inside the body or outside of the body. Incorrect. You have already thinking about the inside the body, but some organisms perform internal fertilization but their embryogenesis occurs outside from the body because of having no any site for the development of new young one. For example, reptiles, birds. Keep in mind, in reptiles and bird, although the process of fertilization is internal type, but they are lack of having, they are devoid of having the uterus, so they are unable to hold the embryo. So they actually, first of all, they form a calcareous shell, that is calcareous shell. Calcareous shell means it is made up by calcium carbonate, CaCO3, calcium carbonate shell around the embryo. Keep in mind, and this embryo will be kept inside the shell, and they will be laid down over the safe place, and after the long time of incubation, the shell get breaked and the embryo will be released out. But the organisms that perform the internal fertilization may be there if their uterus is found. Suppose that some organisms like human being and other mammal organisms have well developed uterus, and what happen in them, the organisms, there will be implantation and placental take place. So organisms provide the safe place for the growth of new young one inside the body. So keep in mind which one is more protective, the more safe, the organisms that lay egg or the organisms that do not lay egg. Keep in mind, the organisms that develop in the organisms in which the embryogenesis occurs outside from the body in form of egg, the organisms called as oviparous organisms, अंडे देने वाले oviparous organisms. And organisms in which fertilization occurs inside the body while the development and the embryogenesis also occurs inside the body, there is called viviparous organisms. It means it gives full birth. Viviparous organisms, it means it gives full birth, full mature baby. So the basic key points for the oviparous, the embryogenesis occurs outside of the body, and the viviparous embryogenesis occurs inside the body. Which one is more safer? It should be asked in your examination. Viviparous animals is more safer because the oviparous animals may be fed by many types of predators. And regarding this, there is the protective cells and required a very safe place. Now back to the embryogenesis in plants. In plants, the embryo develop inside a well mature sac-like structure that is known as ovule. So this is the ovule and this is the embryo. This is the embryo and this is the ovule, and ovules are protective inside the ovary. After some time, the embryo remain in the ovule, and ovule develop to form the seed, and ovary develop into form the pericarp, mesocarp and endocarp, that is the fruit. That is the overall development in the plants. So many types of questions may be asked. It will be given by me regarding a platform, regarding a PDF form. So wait, and the lesson is over. Now in next video lecture we will describe the everything and every facts and concept regarding the chapter 2, that is lesson 2, sexual reproduction in flowering plants. Thank you.